Hallelujah. 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 You have to wear this prophetic glass, prophetic lens to see something that you have never seen before. आपको भविष्यवक्ताई आंखें चाहिए, आपको वो चश्मा चाहिए भविष्यवक्ताई आत्मिक आंखों का वो देखने के लिए जो आपने कभी पहले नहीं देखा। Hallelujah. Hallelujah. This is a prophet respects, you know. This is Did you wear it? Hallelujah. 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 Amen. Amen. I promise you over here, this is a prophetic gift. I mean, prophetic specs over here. Just put it. Yeah, something great is going to happen to you. Hallelujah. Give back. Hallelujah. Hallelujah. Even with the little things, something great will happen. Amen. That is a prophetic ministry. Amen. Hallelujah. So even if we touch somebody, see, you know, something great will be, I mean, you know, what is that? Imparted. That's exactly the same word. Great things shall be imparted. Even if we test somebody, the life is going to change forever. Amen. Hallelujah. किसी को छू ही देते हैं तो जीवन हमेशा के लिए बदल जाता है। Even with one word एक शब्द मात्र से from the mouth of the Lord, परमेश्वर के मुख से your destiny shall be changed. आपका जो भविष्य वो बदल जाता है। Hallelujah. Hallelujah. But we should have such a excitement in my spirit. I mean, and be really excited to see something that you have never seen before in your life. और आपकी आत्मा में वो उत्तेजना होनी चाहिए जो कि मुझे वो देखना है जो मैंने अभी तक अपने जीवन में नहीं देखा। Hallelujah. 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 See, it is a fact that you will not be in warfare all the days of your life. You have to enjoy the benefits of your war. आपको ये बात का ध्यान देना है कि आप जीवन भर आत्मिक मलयुद्ध में नहीं रहेंगे, लेकिन आपको वो आत्मिक मलयुद्ध में जो जय प्राप्त किया उसका आनंद आपको जीवन में लेना है। Hallelujah. Hallelujah. The farmer goes and down to his paddy field and sow the seed. और अगर कोई किसान जो है वो जाकर चावल की खेती में अगर वो बीज को बोता है And he takes rest. और वो जाके आराम करता है बाद में 3 months, 4 months. 3 महीने 4 महीने, And after that he is getting ready for the harvest. और उसके बाद वो तैयार होते हैं फसल के लिए। Amen. आमीन। Amen. आमीन। After sowing the spiritual seed, आत्मिक बीज बोने के बाद you are resting in the spirit to see the result. और आप विश्राम करते हैं आत्मा में उसका प्रतिफल देखने के लिए। Hallelujah. हालेलुया। With your own eyes, you will see a great harvest in your life. आप अपनी आंखों से एक महान फसल को देखेंगे। Hallelujah. हालेलुया। I see in the spirit that many are going to engage in a huge harvest that you have never engaged before. मैं इस वक्त आत्मिक जगत में देख रहा हूँ कि बहुतेरे ऐसे हैं यहाँ पर जो उस महान फसल को काटेंगे, उसको उसकी कटनी को देखेंगे अपनी आंखों से प्रभु के। Hallelujah. But in this meeting, you have to seize all the prophets of Baal. लेकिन आज इस सभा में आपको सारे बाल के नबियों के ऊपर जय को प्राप्त करना है। None of them should escape. एक भी उनमें से छूटना नहीं चाहिए। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. Hallelujah. All those days, all those years, these unclean spirits were blocking and preventing your abundance of rain. और ये जो अशुद्ध आत्माएं कितने सालों से आपकी आशीषों को, वो जो बहुतायत की आशीष है, बहुतायत की जो बारिश है वो आपके जीवन में रोक रही थी वो। Hallelujah. 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 And verse 41 we read that Elijah took all of them, seized all of them and slew them. Where is he? 41. Yeah, 41. Himself brought them down to the brook of Kishon and slew them there. 41. And Elijah said unto him, Get thee up, eat and drink, for there is a sound of abundance of rain. 42. And Ahab went up to eat and to drink. Read. और 40वीं आयत में हम देखते हैं कि कैसे उसने सारे नबियों को पकड़ा और एलिया ने उन्हें नीचे किशोन के नाले में ले जाकर मार डाला। 41वीं आयत में लिखा फिर